Good morning, respected members, and hello, dear students. Hi, this is CA Pratik. I welcome you all to my YouTube channel, GST and Customs Act Fun Learning. Today, we are not going to learn about GST or Customs Act. आज का topic is about Income Tax Act. एक नया टैक्स आ रहा है from 1st of October 2020 in income tax. Okay, so I will explain your entire topic with FAQ and case studies. Next 5 to 7 minutes, please be with me. हम पूरा topic ये cover करेंगे. So listen, in Income Tax Act, from 1st of October 2020, one new tax is coming. What is the name? You know, TCS. Tax collected at source. ये आ रहा है 1st of October से. Okay, so इसमें बहुत सारे FAQs हैं. One by one, we will cover it. See this. First FAQ. Whose responsibility is it? किसका responsibility है to collect tax or pay tax? Whose liability is it under Income Tax Act? TCS किसको भरना है? ये first question. So listen. Who is he? Supplier. जो sell करता है और service देता है वो वाला. So supplier. Supplier is selling goods to this receiver. Correct. Receiver has paid net amount to me, and receiver shall also pay TCS to the supplier. And supplier ने जो TCS collect किया, it will pay to the government. So what is the conclusion? Supplier shall collect TCS from the receiver or buyer on the sale of goods, and then it will pay to the government. So just like GST, यहाँ पे TCS में भी supplier is collecting TCS from receiver and paying it to the government. So किसका responsibility है? किसका liability है? Supplier's liability, responsibility to collect TCS from receiver and pay it to the government. Understood? This is first FAQ. Now second FAQ. Whether TCS is to be collected by every supplier, whether for goods or for service, क्या सबको TCS collect करना है? Listen. Supplier of goods is only required to collect TCS. सिर्फ goods, जो goods sell करता है, he is required to collect TCS. Supplier of service are never required to collect TCS. So whether you are CA, आप service देते हो, advocate, you give service, Paytm, Make My Trip, you all are giving service provider, you are not required to collect TCS on services. So what is the second conclusion? Only the supplier of goods is liable to collect TCS. Fair? Third FAQ. Now, Suno, we came to the conclusion only supplier of goods are required to collect. Third question. Now, whether every supplier of goods are required to collect TCS, क्या हर एक supplier of goods को TCS collect करना है? कोई तो turnover limit होगी 1 lakh, 2 lakh. What is the turnover limit? Listen, supplier of goods जिसका turnover in the preceding financial year, पिछले साल में exceeds rupees 10 crore. I repeat, जिसका preceding financial year में turnover exceed rupees 10 crore, उन्हीं को TCS collect करना है. So if you are a supplier of goods, आपका turnover in the preceding financial year means financial year 1920 exceed करता है 10 crore rupees, then only TCS provisions are applicable. From which date? 1st October 2020. Understood? So that if your turnover is greater than 10 crore, then only TCS is applicable. Correct? Chalo, next question. Now, yes, I'm asking you one question. My turnover in the preceding financial year was greater than 10 crore. So I'm liable for TCS. But my next question. So now from 1st October 2020, even if I sell 1 rupee good, क्या अब मुझे हर एक सेल पे मुझे TCS कलेक्ट करना है? My preceding year turnover was greater than 10 crore. क्या मुझे हर एक सेल पे 1st October से TCS कलेक्ट करना है? Listen carefully. TCS is applicable if net value of consideration received from each buyer exceed rupees 50 lakh. तो ही TCS applicable है. नहीं समझा? Let us understand with an example. See, he is a receiver. I am a supplier. I gave him first invoice of rupees 30 lakh. 30 lakh के मैंने goods बेचे. He paid me 30 lakh. Correct? Since it is below 50 lakh, no TCS. TCS is not applicable. Okay, so even though my turnover is greater than 10 crore, still अभी तक TCS applicable नहीं है. Because अभी तक मेरा sale per buyer, per receiver is below 50 lakh. Okay, so now मैंने इनको second invoice दिया. अब value is say 10 lakh. अभी भी 30 plus 10, 40 lakh हो रहा है. He paid me 10 lakh.
Still, since it is below 50 lakh, TCS provisions are not applicable. अभी भी नहीं. Now I raised him third invoice. यही साल में तीसरा invoice बना. Value is 20 lakh. Now 30 plus 10 plus 20, 60 lakh हो गया. Since it is exceeding 50 lakh, now TCS provisions shall be applicable. अब TCS applicable हो जाएगा. But you know what? See, first invoice 30 lakh, second invoice 10, third 20. So total was 60 lakh. 60 lakh, since 50 lakh से ज्यादा है, TCS is applicable. I agree. But you know what? Up to 50 lakh आपको TCS applicable नहीं है. Since total 60 lakh था, जो balance 10 lakh है, जो बैलेंस 10 लाख है, सिर्फ उसी पे टीसीएस एप्लीकेबल है. सो इट इज द टीसीएस इज एप्लीकेबल ऑन द कंसीडरेशन एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख. सो अगर 55 लाख है तो 5 लाख पे टीसीएस, 75 लाख है तो 25 लाख पे टीसीएस, 60 लाख है तो 10 लाख पे टीसीएस. ओके, सो ये क्राइटेरिया समझो. सुनो एक बार फिर से सुनो. से आई एम अ सप्लायर ऑफ गुड. मैंने ये रिसीवर को गुड्स बेचे पूरे साल में 100 इनवॉइस, 100 इनवॉइस, बट टोटल वैल्यू इज ओनली 20 लाख. इन्होंने मुझे 20 लाख पे किए. ये 20 लाख पे नो टीसीएस. टीसीएस आएगा ही नहीं. व्हाई? बिकॉज इट इज बिलो 50 लाख फॉर दिस बाय. इनको मैं टीसीएस नहीं लगाऊंगा. सेकंड बायर है ये कोई सेकंड रिसीवर है. मैंने इनको भी 50 इनवॉइस बनाया पूरे साल में. टोटल वैल्यू 40 लाख. हाउ मच इज द वैल्यू? 40 लाख. ही पेड me 40 लाख. Now again from this buyer I have received less than 50 lakh. Again TCS will not be applicable. TCS is applicable अगर मुझे उस पर्टिकुलर बायर से 50 लाख से ज्यादा मिला तो ही TCS applicable है, वरना नहीं. वरना it is not applicable. Correct. Now this is third buyer. मैंने इसको सिर्फ 5 इनवॉइस रेज की पूरे ईयर में. You know what the total value was? 60 lakh rupees. 60 lakh rupees. Now this particular buyer को, since I've sold for more than 50, इन्होंने जो भी पैसा दिया, TCS is applicable. TCS is applicable, but on what amount? Out of 60 lakh, 50 lakh पे no TCS, and balance 10 lakh पे TCS shall be applicable. Understood? This is how TCS will work. जितना आप रिसीव करोगे above 50 lakh, उसी पे TCS applicable. Above 50 lakh पे ही TCS applicable है. Yeah. So if I'm a supplier of goods, TCS, when I'm liable, agar consideration from each buyer, each receiver exceed rupees 50 lakh, तो ही TCS is applicable on value above rupees 50 lakh. Up to 50 lakh तो मुझे TCS का टेंशन है ही नहीं. Yeah. So now let's move to next FAQ. See, अभी भी आप पूरा नहीं समझोगे. देखो, now you will understand. What is the event for the collection of TCS? When the TCS liability, time of supply जैसा है ये. जब मैं सेल करता हूँ गुड्स तब टीसीएस लगता है, कि जब कंसीडरेशन मिलता है तब टीसीएस लगता है. ठीक है, तो ये देखो आंसर क्या है. से आई वाज अ सप्लायर. मैंने ये रिसीवर को गुड्स बेचे. कब बेचे? 1 जुलाई 2020 को 60 लाख के. ओके, ही पेड मी मनी ऑफ 60 लाख ऑन 1 दिसंबर 2020. सिंस अमाउंट इज ग्रेटर देन 50 लाख, टीसीएस तो लगेगा. 60 लाख है ना, तो 50 लाख तक नहीं, बट 10 लाख पे टीसीएस तो लगेगा. बट व्हेन? ऑन 1 जुलाई जब मैंने गुड्स बेचे, या 1 दिसंबर को जब मुझे मनी रिसीव हुआ. आंसर इज व्हाट? यू नो, आंसर इज व्हाट? आंसर इज जब मुझे मनी मिलता है 1 दिसंबर 2020, TCS is applicable. In short, TCS is applicable on receipt of the consideration, not on the sale of goods. जब आप सेल करते हो आपको TCS नहीं लगता. जब आपको मनी मिलता है above 50 लाख, तो जितना 50 लाख से ज्यादा मिला उस पे आपको TCS कलेक्ट करना. ओके, सो ये बिल पे, इनवॉइस पे नहीं आएगा TCS, क्योंकि ये सेल पे नहीं है. इट्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द कंसीडरेशन. क्लियर? चलो नेक्स्ट FAQ. नाउ व्हाट इज द रेट ऑफ TCS? I'm constantly saying I have to collect, but what is the rate of TCS? 5%, 12%, what is the rate? Rate of TCS is 0.1% for the consideration exceeding rupees 50 lakh. जितना 50 लाख से ज्यादा मिला, जितना भी ज्यादा मिला, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख से ज्यादा, उस पे रेट इज 0.1% TCS. बस 0.1% TCS. बट इसमें भी एक बेनिफिट है. You know, because of COVID, rate of TCS for the period from 1st October 20 to 31st March 21 एक रिलैक्सेशन दिया है. रेट इज नॉट 0.1%.
रेट इज इन फैक्ट 0.075%, उससे भी 25% कम कर दिया. Okay, so normally rate is 0.1%, but only for this particular period, the rate is reduced to 0.075%. Okay, so अगर आप 50 लाख से ज्यादा अर्न करते हो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बाय, तो आपको टीसीएस चार्ज करना है 0.075% ओनली फॉर दिस पीरियड. नाउ नेक्स्ट एफएक्यू. नाउ रिसीवर बोल रहा है जो मुझे टीसीएस दे रहा है सप्लायर को, ये बोल रहा है कि दिस टीसीएस सो पेड टू मी इज एन एडिशनल बर्डन ऑन हिम of 0.1% or 0.075%. Why the receiver should bear it? Fair question. So सुनो, गवर्नमेंट ने क्या बोला. सप्लायर जो भी गुड्स सेल करेगा, जो भी वो टीसीएस अर्न करेगा, what he will do? He will pay it to the government. Now what government will do? Now this supplier जिसने टीसीएस कलेक्ट किया, he will file one TCS return known as Form 27EQ. इसमें the supplier will write the PAN details of the receiver, and जो भी उसने TCS पे किया, ये TCS उसके 26 AS में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा. किसके? रिसीवर. सो इन शॉर्ट वो वहां से इसको रिफंड क्लेम कर सकता है. ओके, सो व्हाट हैपेंड, सप्लायर ने जो भी TCS कलेक्ट किया वो गवर्नमेंट को पे किया, एंड ही फाइल वन फॉर्म 27EQ. ठीक है, इसमें आई विल राइट द डिटेल्स ऑफ द रिसीवर, and on the basis of 27EQ, the receiver will get his credit in Form 26 AS of Income Tax Act. Correct? वहां से वो रिफंड ले सकता है. Okay, so ये फैसिलिटी भी है. Now I am seeking question from government. कि government supplier has to file Form 27EQ. What is the due date? कब भरना है? Now this form, just like TDS, you have to file quarterly. Quarterly भरना है. So for the first quarter, say April to June, ड्यू डेट इज 15th of July, 15 दिनों के अंदर. नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, ड्यू डेट इज 15th of October. थर्ड क्वार्टर से अक्टूबर टू दिसंबर, ड्यू डेट इज 15th of Jan. 15 दिन दिया. बट फॉर लास्ट क्वार्टर, Jan to March, ड्यू डेट इज नॉट 15th April, ड्यू डेट इज 15th of May. ड्यू डेट इज व्हाट? 15th of May. वहां 45 days दिया ओनली फॉर लास्ट क्वार्टर. क्लोजिंग होता है ना, इसीलिए. Okay, so this are the due date. Now next FAQ. I am a supplier. मैं गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट, आई एम नॉट सेलिंग इन इंडिया, आई एम एक्सपोर्टिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया फॉर ₹5 crore. Shall I collect TCS from that outside India person? उसके पास तो पैन कार्ड भी नहीं होगा. How will he get the refund? Now what government said? TCS is not applicable on sale of goods for following. अगर मैं गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, TCS is not applicable. If I'm selling goods to the central government, state government, embassy, high commission, TCS provisions are not applicable. अगर मैं goods बेच रहा हूँ local authority तो I cannot collect TCS. And also on following goods, अगर मैं ये category के goods बेच रहा हूँ जिसपे already TCS of income tax applicable है, अलग अलग rates है, उस पे भी ये 0.1% नहीं लगेगा. You know what? Which are those goods? Alcohol. Because इस पे अलग से TCS applicable है. Scrap, motor vehicle if value exceed 10 lakh, coal and ignite ore, tinder leaves and timber. So ये सब पे already TCS के 5%, 2%, some rates are already applicable. So again मैं TCS 0.1% नहीं लगाऊंगा, वहां पे respective TCS ही लगेगा. Okay, so if I'm exporting or selling to the government, local authority, जो भी मैं goods बेचूं, I will not collect TCS of 0.1% or any percent. Okay, and also if I'm selling alcohol, scrap, motor vehicle, ये 0.1% वाला TCS नहीं लूंगा, उस पे ऑलरेडी स्पेसिफिक अलग अलग रेट्स है जो पहले से, सो उसके लिए ये 0.1% नहीं लगेगा. सो दिस आर द एक्सेप्शंस. करेक्ट. नाउ फ्यू केस स्टडीज. चलो, इफ यू कैन आंसर आई विल बी हैप्पीएस्ट पर्सन. सुनो क्या पॉइंट है, सुनो क्या पॉइंट है. इफ से आई एम अ सप्लायर, my turnover in the preceding financial year was 12 crore, greater than 12 crore. So TCS is applicable. Now, to this particular buyer, I have sold goods of 60 lakh on 1st of August 2020. He paid me money of only 52 lakh on 5th of October 2020. Now I'm seeking answer from you. When the TCS shall be attracted, मुझे कब collect करके भरना है? Also, on what value should I collect TCS from this receiver? क्या लगता है? Listen, TCS is applicable on the date of receipt of consideration.
in excess of rupees 50 lakh. In the given case, मुझे consideration कब मिला? On 5th of October 2020. इसलिए TCS मैं उनसे कब collect करूंगा? 5th October 2020. Not when I'm selling. जब मुझे 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट मिल गई तब मैं उससे TCS collect करूंगा. Also, on what value will I collect TCS? Yes, paid me only 52 lakh. 8 lakhs बाद में करेगा. So on what value I should collect TCS? Answer is up to 50 lakh तो TCS है ही नहीं. So only on balance 2 lakh I shall collect TCS 0.075% and pay it to the government. And जब वो balance 8 लाख रुपीस देगा तब वापस मैं 0.075% TCS collect करूंगा and government को pay कर दूंगा. Understood? So this is the point. Not when you sell, when you receive consideration above 50 lakh from each buyer. Correct? Chalo, second question, second case study. Now, I'm selling goods. My turnover in the preceding financial year is 18 crore, greater than 10 crore. Hence, TCS is applicable. Now, to this particular buyer, I've sold goods of 60 lakh, again on 1st August. Okay, he paid me only 48 lakhs on 5th April. कब दिया पैसा? 5th April 2021. So late. And balance 12 lakh rupees are bad debts. Balance 12 lakh rupees he did not pay. He's saying nahi milega, bad debts. So out of 60 lakh, how much I received? 48 lakh. Now I'm seeking answer from all of you. When the TCS shall be attracted? Also on what value the TCS shall be attracted? Bataiye. So no. TCS is attracted only if the consideration पैसा मिलना exceed rupees 50 lakh. In the given case, consideration मुझे कितना मिला? Only 48 lakh. I did not receive greater than 50. Hence, TCS provisions applicable in it. Okay, so it is immaterial कि when I'm selling goods is greater than 50. What is material? Consideration should be greater than 50. Hence, in the given case, there is no question of TCS. Understood? Okay, and the final case study. Listen, I am a supplier. My turnover in the preceding financial year is greater than 10 crore, 25 crore. Now to this receiver, I sold goods of rupees 60 lakh. He paid me 20 lakh on December 2020. He paid me 10 lakh in October 2021. He paid me 15 lakh in April 2022. Abhi bhi below 50 lakh. And finally, he paid me balance 15 lakh in Jan 2023. When he has paid me money? Jan 2023. Now, when the TCS shall be attracted? Also, on what value TCS shall be attracted? कब मुझे TCS उससे collect करना है? Listen, TCS कब applicable है? Only if the value exceed rupees 50 lakh and जब कैसा मिलता है तब. So मुझे consideration 50 lakh कब मिला? 50 lakh से ज्यादा. मिला मुझे कब? Jan 2023 में. Hence TCS provisions applicable होंगे Jan 2023 में. Up till Jan 2023, I will not collect TCS क्योंकि value is below 50 lakh. Understood? So selling goods of 60 lakh is not material. 1st August date is not material. जब 50 lakh से ज्यादा मिला उस particular buyer से तब TCS provisions applicable. Okay, so this was the entire topic of TCS in Income Tax Act. Hopefully, मैंने आपके सारे FAQs and case studies solve कर दिए हैं. आपको पूरा knowledge आ गया hopefully. If you like the lecture, I request you to share with maximum members if possible. Okay, ऐसे ही videos में डालते रहूँगा, recent updates करता रहूँगा आपको. Hopefully, आपको अच्छा लगे तो आप share कर सकते हो, मेरी channel को subscribe कर सकते हो and कमेंट सेक्शन में आपको कुछ नया टॉपिक सीखना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन. गुड बाय, गुड नाइट.